दोस्तों, इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान एक ड्रीम है इंडिया को चेंज करने के लिए, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सूरज सर स्टार्ट किए हैं बेस्ट स्पीकर ऑफ द वीक कंपटीशन, जिसमें क्या होता है कि हर सप्ताह एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वे लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और सूरज सर को सेंड करते हैं। उसके बाद उन्हीं लोगों में से जिनका वीडियो बढ़िया होता है उनको चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और फिर वोट करवाया जाता है। तो आप आज हैं इस वीडियो को देखने वाले और वोट करने वाले। इस वीडियो में आपको बहुत सारे लोगों का वीडियो मिलेगा जो इंग्लिश बोलते हुए आपको दिखेंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीकर जो है वो बेस्ट स्पीकर है। Really, I tell you, you can also participate in this competition and you can be great English speaker. This is my guarantee. तो सर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पर आपको टॉपिक दिया जाएगा इंग्लिश से रिलेटेड, हर वो चीज़, वर्ब फॉर्म्स और सारा चीज़ जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए, और उससे आप जुड़कर इंग्लिश को बोल पाएंगे। और आप हमारा इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं, साथ ही साथ पैसे भी कमा सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जो आपको बेहतर लगे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है बस। जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो होंगे विनर, और वो उनको मिलेगा बेस्ट स्पीकर ऑफ द वीक कॉम्पिटिशन का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ कुछ रिवॉर्ड। तो थैंक यू, वॉट this video till the end, and really I tell you it will be amazing experience for you. Good evening everyone, my name is Abhiyan and thank you giving me wonderful opportunity. I am from Bulandshahr, I live in Noida. I hope all are well. So today is my topic watermelon. Watermelon, my favorite fruit is watermelon. It is full of juice. I like its fruit juice. I like its juice too. In summer days, I every day eat watermelon. Mostly my father brings it at home. That's enough from my side. Thank you. Hi friends, hi. My name is Dr. Pranav from Gomacharavar, and this week our topic was my favorite fruit. My favorite fruit is mango, and I can't live in this world without mango because mango is very tasty, and mango is the king of fruit, and mango is national fruit of India, and I like mango, and we can make with mango as a juice, and if you haven't mango then you can take mango juice, and most of the people like mango, and some people like other fruit, but I like mango. Thank you, bye friends, bye. Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I'm also doing well. My name is Hemant Patel and I am from Gujarat. So today guys, I am here to speak about a wonderful topic. I hope you like my topic and video. So let's start. So my topic is my favorite fruit. So all fruits are very healthy and very tasty, but everyone has one special fruit. Everyone likes one special fruit. So I also like one special fruit. I like mango. My favorite fruit is mango. This is mango, and mango is a very different fruit and very unique fruit from others. It's very delicious, it's very healthy, it's very juicy. Mango is my favorite fruit, and mango is the fruit of season summer, and we can get easily in this time because I live in village, and everywhere we can see there are lots of mangoes. So in village we can get easily mango, and it cost very low. This time, this season, it costs very low. So mango is my favorite season. It's juicy, it's tasty, it's very healthy for our body because it has no sugar. It has lots of calorie, but it has no sugar, so it's very healthy for our body. So mango is my favorite fruit. I think mango is
also known as the king of all fruits. And every Gujarati likes mango. So I am also Gujarati, so I like mango. Unripe mango is very useful because we can make uh, juice with the use of unripe mangoes. So unripe mangoes is very useful to make juice, make pickles. Mango pickles are very tasty and very healthy for our body. So I like mango, and I like to eat mango every day. These days mango is very useful and very healthy for our body. So that's all for today from my side. I hope you like my video. So that's all for listening to me. Thank you.